So we start? Yes. Okay. So hello and assalamu alaikum everyone. Uh, I'm your trainer Faiza Batul from OMNI Academy, and today we are here for the Python programming, a little tiny bit workshop to let you go through from the Python because it's the new reel here in Pakistan in AI industry, in data industry as well. If you are familiar or not, Python is something that has been changing the game in the industry since very long, but have been like up to the hype recently in Pakistan. So basically what Python is, it is efficient in the program developing. It is user friendly in the programming language through you can choose with developing and coding the program. Python provides such user friendly structures for the programming language that raise the productivity of the coders and so the developers. When it comes to the mobile application or web development, Python is the largest and high level program and used broadly by the developer. It is the beneficial artificial intelligence, or we say for AIs. So basically, अगर हमारी पाकिस्तानी अवाम फेमिलियर नहीं, और if you are watching this workshop outside the Pakistan, Python is such a dynamic language because of its structure and because of its processing. It is highly in demand in industries these days. Python AI में, data integration में, data analysis में, और इसके अलावा डेटा माइनिंग के अंदर सब जगह पाइथन यूज हो रही है। आप रोबोटिक्स से लेकर आईओटी से लेकर एआई एमएल मशीन लर्निंग न्यूट्रल लैंग्वेज लर्निंग सब जगह पाइथन इज बीन रॉकिंग। इफ वी टॉक अबाउट चैट जीपीटी, द न्यू प्लेटफॉर्म हियर रोलिंग एंड रॉकिंग, that's also developed upon Python and AI. So Python is such an amazing language if you want to learn it. Features of Python are more amazing than itself. The language is easy to learn and use. Even the sixth standard boy or a girl, a sixth standard kid, a working woman, a working man, a very busy person, a businessman could learn it. Python is very easy. अगर आप घर में काम करते हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, आप तब भी लर्न कर सकते हैं। आपके सिक्स स्टैंडर्ड तक के बच्चे भी पाइथन लर्न कर सकते हैं। इट्स दैट इजी। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड टाइप लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, फ्री एंड ओपन सोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, GUI programming support, and integrated. These are all the very depthful point that I have mentioned here. When you learn Python from OMNI Academy or with us, then you will learn all about these things. But for just your overthrow, Python is open for all, for everyone. You can learn it wherever, however, whenever you want. So if we move ahead, we have, okay, so the advantages of Python are it requires less coding. हमारे पास in software engineering world, in IT industry, there are lots of coding languages, plus 200 languages we have that we work on, whether it's PHP, whether it's R, whether it's ASP.NET, C++, C Sharp, all of the languages. But Python is one of the most easiest to learn and one of the most favorable from Google, okay, and from our developers as well, from big heads of software industries or IT industries or even the market industries as well. Okay, it is easy to learn. First of all, it is very easy to code and very easy to learn. It's object oriented programming language. हमारे पास जो software engineers who's going to see these workshops वो understand करेंगे that object oriented is a process that जो हमें होता हुआ दिखता नहीं है, but we know from the structure of the code कि ये एक object oriented language है. Object oriented होने से एक developer उस language पे जो काम कर रहा है, अगर वो दूसरे developer को वो code pass out करता है, देन उस डेवलपर के लिए जो नया है उस कोडिंग के लिए उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। और पाइथन इस चीज को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म्स। ये हर तरह के सिस्टम पर, हर तरह की यूआई पर, हर तरह के प्लेटफॉर्म पर रन हो जाएगा, whether it's Oplex, whether it's Google, whether it's Windows, whether it's Linux. It supports third party modules as well. थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का बेसिक मकसद ये होता है कि जैसे आप घर में पढ़ते हैं और आपको बाहर से किताबों की, ट्यूटोरियल्स की, ट्यूशन की जरूरत होती है, इसी तरह से हमें कोडिंग में थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स की, लाइब्रेरीज की, एक्सटेंशंस की जरूरत होती है अपने कोड में, ताकि हम जल्द से जल्द कोड और प्रोग्राम टाइप कर सकें और ताकि उसे और एफिशिएंटली रन कर सकें, जो हमें अपने ज्यादा सीनियर डेवलपर से या ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस कोडर्स से मिलता है। तो पाइथन जो है वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को, एक्सटेंशंस को और एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरीज को भी सपोर्ट करता है। ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का मकसद है कि अगर आप
बेशक एक 6 ईयर ओल्ड है, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तानी इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा नाम है अरफा करीम, हु बिल्ड्स दैट सॉफ्टवेयर एंड मेड दिस चेंज इन दिस वर्ल्ड इन दिस यंग एज। इसी तरह से व्हेन वी कम टू द पॉइंट ऑफ ओपन सोर्स कम्युनिटी, अगर आप एक 6 स्टैंडर्ड बॉय भी है और गर्ल है, आप पाइथन लर्न करते हैं, आप उसमें कुछ नई डेवलपमेंट लेकर आते हैं, कुछ उसमें ऐसा कोड करते हैं जो आपको लगता है कि लैंग्वेजेस में ये कमी है, आप पूरी कर सकते हैं, या आप कोई लाइब्रेरी बिल्ड कर सकते हैं जो बाकी सब लोग यूज कर सकते हैं, आप लैंग्वेज इट सेल्फ इसके अंदर कोई अपडेट कर सकते हैं, तो उसका मकसद हमारे पास होता है ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इट जस्ट मीन एज दैट के यू योरसेल्फ कैन मेक चेंज एंड the coding is not hide behind the curtains. The code, the language is up to the stage. User friendly data structures mean data is one of the toughest thing to learn and toughest thing to know is for human mind. That's why we use machines for these. We use the database for this. Basically our entire world is collective upon data. So Python make it very easy to understand data, to open files, to destructures file, to save you from the hacking stuff. Productivity and speed is also good with the Python. If you are app developer, you will be very related with this, that when we build an app consume a lot of space in your PC. It's a very hectic to build an app, and it get a lot of energy out of you to build an app. It gets so many times save, and then so many time updates, it get so many times neutralized. Then Python is very easy. You write a code, you compose the code, and you learn a code, right? And then learning easy and supportive, and learning ease and support is available for the Python. That's one thing. पाइथन के ट्यूटोरियल्स हो, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन हो, पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, फ्रॉम डाउनलोडिंग पाइथन टू लर्निंग इट, it's all available online. Plus at Omni Academy we teach it with some other few benefits. Okay, so future applications of Python 2023 में आपको जो देखने को मिलेंगी, these are Python application just for your idea, कि अगर आप एक Python developer बनना चाहते हैं, या अगर आप Python के अंदर आना चाहते हैं और अपना करियर इसमें बिल्ड करना चाहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ वर्किंग इंटायरली आउटसाइड ऑफ दिस आईटी इंडस्ट्री, वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट Python पर होती है, राइट? उसके बाद डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस जो होती हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली, जो आप ऐप डाउनलोड करते हैं अपने पास डेस्कटॉप्स में, वो पाइथन पे क्रिएट किए जा सकते हैं। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी पाइथन पर ही बनते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, हमेशा हर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज से आप सॉफ्टवेयर ही डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स की मिसाल में आपके पास जैसे राइट लास्ट ईयर हमारे पास कोविड की एप्लीकेशन थी, वेबसाइट्स थी, वो सब जो है वो डेटा कलेक्टिवली AI पे वर्क करने वाली एप्लीकेशन। जैसे आपके पास एक नादरा की हमारे पास पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन है, आप घर बैठे अपने थंब और हैंड प्रिंट जो है वो रिकग्नाइज करवा सकते हैं। फोटो ID रिकग्निशन, आपका मोबाइल लॉक से लेकर आपके पासपोर्ट रिकग्निशन, आपका बैंक का सारा प्रोसेस, ये सब डेटा AI और ML के थ्रू होता है, विच इंक्लूड्स पाइथन इन दैट। एजुकेशन के फील्ड में पाइथन इज ऑल्सो इमर्जिंग दीज डेज, पीपल आर यूजिंग इट जस्ट लाइक ChatGPT एंड अदर थाउजेंड ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। हमारे पास AI कंटेंट राइटर्स हैं, हमारे पास AI इमेज जनरेटर्स हैं, हमारे पास AI रीडर्स मौजूद हैं, हमारे पास AI ग्राफिक जो है जनरेट करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारे पास एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करते हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस में भी पाइथन का बहुत बड़ा हाथ है। If we see it, it's the back core of lots of things, including business and application में सबसे ज्यादा, because business applications are such a complex structure and things to build. Python we really need there, right? Business में Python we really need if we are building that business application for someone. Database access, again I have talked about this earlier, right before it, के database and data structure is such a hectic thing if we don't have Python to summarize it, to clean it up, to emerge it into one composed file or a good process data or process streams में या data streams में Python हमारी help करती है। Other than this, हम जो है वो collection of data which goes through trillions and millions of Excel sheets को लेकर बैठे रहे और सारी जिंदगी यही करते रहे। Google or other big giant names use Python to sort their data for their data analysis and for their collection of the data from all over internet. Network programming में भी Python बहुत काम आती है if you know the higher enterprise level software companies or big hospitals, big businesses, international market businesses, stock exchange. Python is there. Where AI is, where data is, Python will be there. Know this. अगर जहां पर आपके पास ट्रैफिक है, यूजर्स हैं, लोग यूज करते हैं, then there will be data, और उस डेटा के लिए we need Python to get something out of it. Games and 3D applications are one of the highest point where Python is speaking up.
हमारे पास जितने भी आजकल गेम्स हैं, फ्रॉम पबजी टू एनी अदर गेम दैट्स स्क्रोलिंग थ्रू आवर टीनेजर्स माइंड, पाइथन पर ही बिल्ड किए जाते हैं फॉर दैट इमर्सिव, दैट मोर lively like of touch to that. If we move ahead now, we have top industries verticals where Python is being used. ये वो again industries की percentage है nowadays in 2023, जिसमें आप देख सकते हैं कि how hyped Python is. Science and education में 8.54% industries is साइंस एंड एजुकेशन की कंपनीज जो हैं वो पाइथन पर डिपेंड करती हैं. कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में 6.88%, विच इंक्लूड्स डेल, विच इंक्लूड्स एप्पल and other software, other computer engineering companies. 2.60% arts and entertainment is dependent upon Python. Again, film industry, cinematography, and other stuff is also dependent upon that. Where data is, there will be Python. Food and drink, 2.30%. Food industry is also emerging there. फूड पैंडा के डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, या जो और हमारे पास आउटसाइड पाकिस्तान इमर्ज हो रहे हैं, द एप्स which are more AI based, which gives you food 3D pictures, or you can order food through your past orders, or you can get a 360-degree view of a restaurant. This is all because of Python and data and AI. Other industries include 79.68%, which include stock exchange, Bitcoin, and other banking, finance industry, and so much more are included in this. Let's move ahead. Okay, so now we come to the point that you know what Python is, the importance of Python and the benefits of Python. It will be the future of software programming, or computer engineers never gonna regret. If you have learned Python, you will never gonna be stopped to a penny that you have earned. You're gonna earn in millions. So now Omni Academy provides you these key learning course in which you can learn from Python fundamentals to the expert level of Python, so you can crack any interview your way, or you can go to an internship right away, or can have a job in your lab ASAP. Course key learning, we will learn Python fundamentals, which includes all the information about Python, its integrated development environment, which says IDLE, execution of the code, command line code, Python documentation, getting help from official sites of python.com. Basic Python syntax you will learn, because every other aspect of a language stands upon the basic brick of its syntax. Once you know the language syntax, you can be a master of any other language out there by just teaching a little bit syntax here and there. You will learn the Python syntax with us. Next, you will learn language components with us. These are the language components that you can find in any other language, but every language has its specific one, like identing requirements, then if statement. These are like our operation statements, but identification requirements is specifically good for Python. Wherever you will learn out there in the market, हर जगह you will won't earn that thing, that one point जिससे आप पूरी language को master करते हैं. हर language का एक की होता है लर्न करने का, which is in its syntax and its language components, which build upon one another, and you will have that skill level that you can crack any interview and get the job of your dreams. Understanding collections, at Omni we will get you through the understanding collections. Collection is one of the toughest part of learning Python, where all the developers, students, new learners, our junior coders get stuck to, because understanding of collection get lags there. Python functions very important, very specific to the Python. हर language से हटकर सब languages के अपने functions होते हैं. हमारे पास अक्सर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक ही लैंग्वेज के फंक्शन समझाकर बाकी सब लैंग्वेजेस पे वही ट्रांस कॉपी कर दिया जाता है, which is not case here in Omni. Will get you through the Python functions as well, each and specific in very depth of it. So if you now you have all the information to get you connected to us. So connect on the given number on the screen, which you can see here. You can text it on the number given here, or just go ahead and email at omniacademy.com. There is just a one chance for you that it's going to pay you off your entire life. Connect with Omni, get into this great course of Python, and get ahead start with your AI, ML, machine learning, natural language learning, and robotics careers right now. Thank you. Thank you, madam. You're welcome.